All right, big match is here. It's Kolkata Knight Riders versus Lucknow Super Giants. और आज का ये दिन हमें कहीं ना कहीं हमारे टॉप 3 तो प्रोवाइड कर ही देगा. एटलीस्ट हम इतना होप कर सकते हैं. इससे ज्यादा और भी ज्यादा क्या मुश्किलें हो सकती है पॉइंट्स टेबल पे, मुझे लगता तो नहीं है. बट यू नेवर नो. इट्स द गेम ऑफ क्रिकेट, इट्स द गेम ऑफ आईपीएल. स्टिल कैलकुलेशंस जारी हो सकती हैं. और इसी बारे में बात करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं यहाँ पर प्रत्यय. हाउ डिफिकल्ट इट मे कैन बी. लाइक अभी हमें दिखाई पड़ रहा है सीएसके इज इजीली विनिंग इट अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स. सो दे आर लाइक एक तो बड़े मार्जिन से भी ये विक्ट्री इनके हाथ लग रही है. सो इनका एनआरआर भी अच्छा हो सकता है. देन दे कैन गेट टू टॉप 2 अपना कंप्लीट वहां पर कंफर्म कर सकते हैं टॉप 2 पोजीशन. नाउ लखनऊ और कोलकाता के बीच में से अगेन रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि दोनों टीम में से कौन सी टीम है जिसको एक बेटर चांस मिलेगा. अगर एलएसजी कंफर्म करती है अपना प्लेऑफ में कंफर्मेशन, तो उसमें वो टॉप 2 होगा कि टॉप 3 होगा. टोटली डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ मार्जिन दे हैव हैड. बट इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता ना. मतलब और कुछ तो नहीं है ना जिसके लिए हमें प्रिपेयर होना चाहिए कि नो अभी वी हैव टू वेट फॉर दिस. नहीं, अब इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं होगा. और इससे ज्यादा होगा तो फिर व्यूअर्स से भी अब सहा नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 67 मैचेस हो चुके हैं. अभी तक आपको टीम्स नहीं मालूम है कि कौन सी 4 जाने वाली है पक्की, और लास्ट डे पे डिसाइड होगा. आई डोंट थिंक इससे ज्यादा अच्छा मुझे नहीं लगता कोई लीग सीजन हो सकता है जहां पे लास्ट मैच तक आपको वेट करना हो कि कौन सी 4 टीम्स फाइनली जाएंगी, और इतनी टीम्स अभी भी कंटेंशन में है. बट आई थिंक चेन्नई सुपर किंग्स हैव डन देमसेल्व्स अ ग्रेट फेवर by winning this game by a big margin. Of course, it will be a big win. The match is still on, and of course we will have to wait for the final eventual calculations कि Lucknow Super Giants को कितने margin से जीतना होगा if they have to surpass Chennai Super Kings to ensure their top two finish. But I still think it is going to be a very very big margin, क्योंकि चेन्नई यहाँ पे बड़े मार्जिन से जीतेगा तो उनका नेट रन रेट भी उतना ही ज्यादा अच्छा इंप्रूव हो जाएगा. And then toppling that will require LSG to beat KKR by a very big margin. And not to forget that KKR are playing at home, and both the sides, LSG, KKR, both of them are coming after victories. KKR, I think, would be slightly higher on confidence because they have defeated a very informed team at their own den. Chennai Super Kings, they managed to defeat them by 6 wickets. LSG, again, even they have had a couple of good games, defeated Sunrisers Hyderabad, then Mumbai Indians. And specifically the victory against Mumbai, it came very out of nowhere. It was an unlikely victory that Mohsin Khan managed to defend 11 runs in the last over, and securing those 2 very crucial points. But I think that yes, both the teams would be under pressure, and more than the run rate, I think the net run rate, what is more important for these 2 teams is to secure those 2 points, because many a times what happens is that when you start looking at the net run rate part a lot more, and you start to push yourself to win the game by a certain margin, you end up making more mistakes, and you might as well end up losing the game. So what is more important is that, of course, net run rate calculations are going to come into the play, but still you have to first of all ensure that at least you win, because if you do not win, then you are straightforwardly ruled out of contention. So winning, of course, still remains the top priority. And I think these are 2 great teams, form teams, as I said, because Kolkata coming after a victory, LSG coming after a couple of victories as well. So I think it's a great match at our hands. Very little, but their kind of a victories Kolkata has have in this season so far. But Kaustav, as you were discussing about Kolkata and LSG and the playoff scenarios in this IPL, like since you are from Kolkata side, this discussion particularly, like for you, how do you see the road to playoffs for Kolkata Knight Riders? Is it really possible for them? Because right now CSK is confirming their berth for playoffs. LSG is looking very lethal in this IPL season already. MIRCB are raring to go. So do you see there is any chance for Kolkata Knight Riders to go and end up in the playoffs? Ummid pe dunya kaayam, as they say. I think that is what we can hope for. That if KKR wins by some around, people are saying it will be around 105, 106 runs to topple RCB's net run rate. So I don't really know the exact calculation in how many wickets we have to win as well. That is one important discussion. So yeah, there's of course in cricket you talk about possibilities. This is also a possibility, but to be very honest, I don't see KKR winning by such a big margin against LSG, who are playing some brilliant cricket at the moment. Marcus Stoinis is, how he's playing. Then there are Nicholas Puran and other players as well. It is expected to be a high-scoring encounter, so I'm not really expecting them to win by such a margin. But then again, a win is a win, nevertheless. So of course, just
with a win, probably will be in the battle. I think that is what's important at the moment. Right. So basically, it all totally depends kind of a cricket these guys are going to play. उसके बाद ही we can get to have a result कि after all हमारी top 3 आज कौन सी हो सकती हैं. But let's take a look at the head-to-head of Kolkata Knight Riders and Lucknow Super Giants, which is again not that great for Kolkata's end because Lucknow और Kolkata ने अभी तक जितने मुकाबले खेले हैं, which is to उन दोनों में लखनऊ सुपर जायंट्स ने बाजी मारी है और कोलकाता के हाथ एक भी जीत नहीं लगी है. बट यू नेवर नो, आज का वो मुकाबला एक ऐसा हो सकता है. नाउ इफ वी टेक दिस सिनेरियो लाइक दिस, लेट्स से आज एलएसजी ना जीतकर कोलकाता नाइट राइडर्स जीत जाती है, प्रत्यय उसके बाद सिचुएशन क्या होने वाली है? लाइक एलएसजी जीतेगी नहीं, देन दे हैव टू वेट फॉर आरसीबी एंड एमआई. तो हमें फिर सिनेरियो कैसा दिखाई पड़ेगा? हु इज गोना एंटर देन? See, I think it's pretty straightforward for LSG right now. उन्हें ये मैच जीतना है, and I think if they win it, they are definitely qualifying. जो टॉप 2 का है यहाँ पे कंटेंशन, that is the main point. LSG को सिर्फ इस चीज की चिंता करनी है कि वो एक certain margin से जीते ताकि वो टॉप 2 में डिस्प्लेस कर पाए चेन्नई सुपर किंग्स को, because we all know that वो एक added advantage होता है आपके पास में. If you are ending up in the top 2, then you get 2 shots to make it to the finale, and in this kind of a competitive league, it is a big plus because you never know. एक दिन आपका खराब हो सकता है, you might as well not be able to perform in qualifier 1, then you go to the eliminator, play the winner there in the qualifier 2, so it gives you an additional chance, and that is a very very important chance because you basically are getting the reward of topping the league, a competitive league. So it is only fair that the first 2 teams, because we are seeing it is such a tight table that आप लास्ट पेनल्टीमेट डे पे अभी भी आप नहीं बता पा रहे हैं कि कौन सी 4 टीम्स क्वालिफाई करेंगे. सो इफ यू हैव इंडीड टॉप दैट काइंड ऑफ अ टेबल, you should definitely be rewarded by 2 chances to make it to the finale. So Lucknow Super Giants, otherwise, qualification for them is pretty straightforward. Win the game, you are qualified. KKR, even if they win, they still will have to depend on other results as far as RCB and MI go. They will pray that both of them end up losing their games, and not to forget that KKR have a very dismal run rate. But if you see what's the interesting part, if you remove the no result game that Lucknow played, they have 7 wins, 14 points, and KKR have 6 wins. And here you are talking about a team which is placed at the 7th spot and a team which is currently placed at the 3rd spot. So this is how tight the table has been, that the team which is at number 3 position has only 1 victory more than the team which is placed at the 7th spot. So this just kind of tells you what kind of an IPL we have had, and no wonder it's been one of the best seasons ever, because this is the kind of competition that you want to see. As for what things are working for Kolkata Knight Riders, I think in the recent past, as I said, the previous victory, that is going to give them a lot of confidence, because historically they have struggled in Chennai. This was, I guess, the first time they won there after the 2012 IPL final. So you're talking about not having won at a place for an entire decade, and going there, beating the informed team, beating Dhoni in his own den. That I don't think there's anything which can give you more confidence as a captain, as a young leader for Nitish Rana. That was a great moment, and not to forget that he led from the front. It was his partnership with Rinku Singh that actually managed to keep Kolkata Knight Riders ahead in the game. And the spin twins, rather the trio, because KKR have been entirely reliant on Suyash, Varun Chakravarti, and Sunil Narayan. So going to Chennai, which is their stronger suit, on a slow track, they have their own great spinners, Theekshana, Moin, and Jadeja. But on the day, it was their spinners, the KKR spinners, who actually ended up beating CSK spinners. So I think they would definitely be high on confidence. But like I said, and even you correctly pointed out in the pre-show, that this year the home teams have not really had the wood over oppositions whenever they are playing at home, because you've seen CSK losing more games than they have won at Chennai. Bangalore haven't really had a great run at Chinnaswamy. So we are seeing even Kolkata have lost a few games at Eden Gardens. So it is not an IPL where you are seeing that teams are really performing well at home. So they will have to be wary of the fact. And another part about LSG is that they have been the quiet, calm customer. They haven't really made a lot of noise, but when you look at their performances, they've quietly kept winning games, and they've just kept themselves in contention. Just keeping themselves in the race. So it is definitely not an opposition that you would want to take lightly at any cost. So KKR will have to be wary of LSG. Even if they are playing at home, they definitely will have to be very cautious. राइट और इसी के साथ एक बार देख लेते हैं हम लोग पिच रिपोर्ट क्या कहती है, बिकॉज पिच इज ऑल अबाउट दैट कैन रियली गिव अस वन रिजल्ट
at least before the match. The pitch in Eden Gardens is a spin better than pace. The average first inning score in IPL 2023 is 195.7. The high scoring contest can be expected. So यहाँ पर expect किया जा रहा है since कोलकाता ने already toss जीत करके पहले fielding करने का option choose किया है. So LSG has to put up a good score in front of Kolkata to really beat them if they really want to for sure. लेकिन Costa, I would like to ask this question, like you जैसे कि प्रत्या ने अभी राइटली मेंशन किया कि इस पूरे सीजन में कोलकाता जो नंबर 7 पोजीशन पे है और लखनऊ सुपर जायंट्स जो कि टॉप में है, उन दोनों के बीच में जो परसेंटेज ऑफ जो मैचेस उन्होंने लूज आउट किए हैं उनका डिफरेंस जस्ट एक मैच का है, उससे ज्यादा का डिफरेंस नहीं है. बट स्टिल कोलकाता इज डाउन देयर और लखनऊ इतना ऊपर है. बट आई वांट टू नो कि कोलकाता एक्चुअली अपना जो रन है बेसिकली जो उनका फ्लो था वो उन्होंने कहाँ पर खोया, वेयर दे एग्जैक्टली टेंड टू लाइक यार ये टीम शायद फिनिश नहीं कर पाएगी टॉप पे, ये टीम शायद थोड़ा नीचे रह जाएगी. सो वेयर दे हैव एग्जैक्टली लॉस्ट इट. देखिए अभी भी टॉप 4 में जब जाने की बात करते हैं, मतलब कोलकाता अभी भी जा सकता है, ऐसा नहीं. तो मैं अभी कभी नहीं बोलूंगा कि टॉप 4 से अभी भी बाहर है. सो एज अ फैन ऑफ कोर्स आई विल बी होपफुल दे मेक इट टू द टॉप 4. लेट्स कॉल इट नियर इम्पॉसिबल. ओके. Okay, I'll give you points for that. But then again, ठीक. I think एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कोलकाता की inconsistency. You never know when these players will step up. Players like Sunil Narine और Andre Russell. On top of that, नीतीश राणा ने इस सीजन बहुत बार बोला है, लास्ट मैच के बाद भी बोला है कि वो केकेआर मतलब ईडन गार्डन्स के पिच से ज्यादा खुश है नहीं, क्योंकि वो ईडन गार्डन्स का पिच जो भी है शायद ज्यादा बैटर्स फ्रेंडली हो रहा है. केकेआर को ज्यादा एडवांटेज नहीं मिल रहा है. केकेआर 3 स्पिनर खिला रहे हैं लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा है. जैसे चेपॉक में गया, चेपॉक में थोड़ा बहुत स्पिन जब हुआ तो केकेआर के बॉलर्स ने अपना कमाल दिखाया. सेम कैन नॉट बी सेड अबाउट ईडन गार्डन्स. तो आई थिंक होम एडवांटेज उतना मिला नहीं है, जैसा नीतीश राणा ने ब्राइटली पॉइंट आउट किया लास्ट मैच के बाद. तो अगेन यार कंसिस्टेंसी इज अ बिग इशू. वेंकटेश अय्यर कभी सेंचुरी मार रहा है, कभी 0 पे आउट हो रहा है. नीतीश राणा and रिंकू सिंह probably are the only 2 players who were consistent throughout, along with Varun Chakravarti with the ball. जेसन रॉय भी इनिशियली बहुत अच्छा स्टार्ट किया, लास्ट 2-3 मैच में उतना चल नहीं रहा है. ऑफ कोर्स यू डोंट एक्सपेक्ट एवरीवन टू क्लिक इन एवरी मैच, बट थोड़ा मेरे को लगता है कि कॉम्बिनेशन भी थोड़ा समझने में टाइम लग गया था केकेआर को. आप बहुत सारे चेंजेस देख रहे थे, ओपनिंग कॉम्बिनेशंस बहुत सारे नए आ रहे थे, लेकिन लास्ट 4-5 मैच में जाके कंफर्म हुआ कि नहीं चलो गुरबाज और जेसन रॉय को हम लोग बैक करेंगे. पहले जगदीशन बहुत सारे मैच खेल रहा था, फिर लिटन दास को बीच में एक मैच मिला, उसके बाद उसको मौका नहीं मिला था. शार्दुल ठाकुर का फॉर्म में शायद लास्ट मैच में 3 ओवर में 15 रन कुछ ऐसा कंसीड किया था. तो आई थिंक उसका भी फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है अभी. सामने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी है, तो इंडिया के लिए भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकता है क्योंकि इंग्लैंड में होने वाला है कंपटीशन. तो आई थिंक ओवरऑल जैसे टूर्नामेंट खत्म हो रहा है केकेआर का फॉर्म आ रहा है, इनिशियल डेज में उतना था नहीं. आई थिंक दैट इज द ओनली प्रॉब्लम दैट दे हैड की टीम कॉम्बिनेशन जो खिलाना है उसको समझने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया है देन अदर टीम्स जो बहुत पहले से सॉर्टेड था. राइट. और बातों ही बातों उधर चेन्नई सुपर किंग्स ने 77 रन से मुकाबला जीत लिया, विच मींस उन्होंने अपना प्लेऑफ कंफर्म कर लिया है. बस टॉप 2 की बारी है, तो वो भी इस मुकाबले के बाद कंफर्मेशन हो जाएगी. वैसे मुझे लगता है काफी हद तक चेन्नई सुपर किंग्स ही होने वाली है, बिकॉज 77 रन से एक बड़ा मुकाबला जीता है, जिससे उनके न सिर्फ पॉइंट्स पर बल्कि एनआरआर पर भी फर्क पड़ेगा. और लखनऊ उनसे कुछ पॉइंट्स ही पीछे थी इन टर्म्स ऑफ एनआरआर, और ये डिफरेंस काफी चेन्नई ने बढ़ा दिया है. सो अगर आज के मैच में हमें कुछ बहुत ही एडवर्स रिजल्ट्स देखने को नहीं मिले, सो दिस इज गोइंग टू बी समथिंग कि चेन्नई टॉप 2 पर कंप्लीटली अपना हद्दा जमाएगी और उसके बाद में उनको एक और चांस मिलेगा, विच मींस देयर इज अ चांस कि चेन्नई सुपर किंग्स डेफिनेटली एटलीस्ट अपने प्लेऑफ के मुकाबले चेपॉक में खेलेगी. तो जो लास्ट मैच धोनी ने खेला था चेपॉक में, वो उनका लास्ट नहीं होगा. वेल दैट्स ग्रेट. बट एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त प्लेयर्स टू वॉच आउट पर, जिस तरीके से कोलकाता और लखनऊ प्लेयर्स हैं जिन पर नजर हो सकती है हमारी, बिकॉज वो कमाल कर सकते हैं अपनी टीम के लिए. सो लखनऊ सुपर जायंट्स के एंड से क्विंटन डिकॉक 95 मैचेस उन्होंने खेले, 2879 रन उन्होंने स्कोर किए, 140 उनका हाईएस्ट है और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बैटर है when it comes to लखनऊ सुपर जायंट्स. काफी अच्छी इनिंग्स उन्होंने खेली है. ना इफ वी कैन गो टू कोलकाता नाइट राइडर्स, तो उनके एंड से नीतीश राणा इज देयर, और नीतीश राणा ने जिस तरीके से अभी तक कोलकाता के लिए पारियां संभाली हैं, वो डेफिनेटली डिजर्व करते हैं. और मैचेस जिताने के लिए अगर कोलकाता आज किसी पर रिलाई कर सकता है तो वो नीतीश राणा जरूर होने चाहिए. प्लेयर्स टू वॉच आउट के साथ साथ एक बार टॉप परफॉर्मर पर भी नजर डाल लेते हैं, जो कि चेन्नई वाले मुकाबले जो अभी फिनिश हुआ है उसमें हमें देखने को मिला है. तो हमने फर्स्ट इनिंग में देखा डिवन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड को एक बहुत ही शानदार पार्टनरशिप पुटअप करते हुए, बिकॉज इनके रन्स के चलते ही जिस तरीके का परफॉर्मेंस चेन्नई ने दिया है, जो इतना बड़ा हमें मार्जिन देखने को मिल रहा है,
वो इनके एंड से आया है. I would like to know Pratyay about them. Devon Conway, Ruturaj Gaikwad, they are the consistent people so far for CSK और उन्होंने हमेशा जरूरत पड़ने पर रन्स बनाए हैं. लेकिन आज इतना बड़ा स्कोर खड़ा किया सीएसके का. आई वुड रियली लाइक टू नो कि जब इतना क्रूशल मैचेस होते हैं तो ऐसे में सीएसके की टीम इतनी इतनी ज्यादा यूनाइट होकर के कैसे आ जाती है. लाइक आई एम नॉट सेइंग कि इट इज जस्ट द एमएस धोनी फैक्टर, बट काफी सारे यंगस्टर्स हैं आपकी टीम में और यंगस्टर्स को स्ट्रीमलाइन करना आई थिंक आपको भी पता होगा प्रत्येक कितना डिफिकल्ट होता है. बट हाउ दे आर एक्चुअली डूइंग इट, लाइक इन टर्म्स ऑफ सीएसके, हाउ दे आर रियली डूइंग इट? See, this is what champions team do, राजसी. जब टाइम आता है तब उनको सबसे ज्यादा जब परफॉर्म करने की जरूरत होती है तब वो करके दिखा पाते हैं. This is what actually end up separating the champion teams with the not so champion teams. And I think Chennai have done that. Not just this year, they have been doing it right since the start. They were the runners up in the inaugural edition, and this is the 12th time they are making into the playoffs. No other team has managed to do that. Ninth is the second spot for Mumbai Indians. So that tells you that it's a very very consistent side, and we cannot forget that they were not in action for a couple of years. So that was an opportunity lost for them to be making into the playoffs. Who knows? Even those two could have been added, and you could have been talking about 14 playoff positions for them. So this has been a franchise which has been very consistent. And if you look, when Lucknow Super Giants and Gujarat Titans were not added, gradually IPL was becoming all about Mumbai and Chennai. Of course, RCB was there because their fan base is one of the most loyal fan bases you will ever find anywhere. But if you talk about competition, it was fast becoming a tournament about two teams. It was becoming very Mumbai and Chennai centric. So it is good in a sense that the two new additions that have been made, those two are competitive teams. Because yes, there is Rajasthan Royals. Last 2-3 years have been good for them. Punjab Kings are there. Delhi Capitals are there. But most of the teams, Hyderabad, Delhi, whichever team you actually talk about, most of these teams have become surviving teams who are just turning up, who are playing cricket, who are turning up for 14 games, 12 games, whatever number of games are being played in the league stage. But they are not really performing. They are not really qualifying. You take Punjab Kings for that matter. 9 consecutive seasons they have not managed to qualify after they played the final in 2014. So you don't want to become that kind of a team. That is where I think Chennai have done exceedingly well. And even today, you can't say that Gaikwad and Conway in just today's game, because every single game I can't recall even one game where they haven't performed, together. Every single game they have turned up with absolute unfailing consistency, and they have delivered great starts to their team. By far the most prolific pair this season, behind, I guess, Virat Kohli and Faf du Plessis. Both these pairs, Kohli and du Plessis for Bangalore, and Conway and Gaikwad, right hand, left hand combination for CSK. I think the kind of partnership they gave right at the start, बिकॉज एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा सा स्लो ट्रैक होगा, शायद स्पिनर्स को हेल्प होगी, शायद हो सकता है डे गेम है तो जो है थोड़ा बैटर्स को संभाल के खेलना होगा. बट राइट फ्रॉम द ऑनसेट they looked aggressive, trying to dominate the opposition. And of course, all credit to their batting, the manner in which they found the gaps. But they were definitely held by some inconsistency from Delhi bowlers as well, because if you look at pacers, they really were not able to identify what was the correct length to bowl to them, because at times they were going too full, again taken off for runs. Other occasions they were too short, again taken for runs. Spinners, your main strength, because you had Lalit, Aksar and Kuldeep, and all of them combined are giving nearly 100 runs in their 8 or 9 overs. So that is another position where I think Delhi ended up conceding something that they should not have conceded. And spinners too, I think pulling too full on occasions, not really being able to manage their lines and lengths properly. And if you do those kind of mistakes against batters of the caliber of Conway and Gaikwad, they are definitely going to milk you. And again, when Delhi's turn came to bat, they were chasing. You say that okay, it's cooler, when everyone talks about कि दिन के गेम्स में अगर आप चेस कर रहे हो तो शायद आपको थोड़ा बैटर्स के लिए इजी हो जाता है, क्योंकि उतनी गर्मी में उन्हें बैटिंग नहीं करनी पड़ती. बट गर्मी वहाँ पे सीएसके के बॉलर्स ने बढ़ा रखी थी, बिकॉज जिस तरीके से दीपक चार बॉलिंग कर रहे हैं पूरे पिछले 3-4 मैचेस में, अगर आप उठा के देखें, 2 विकेट मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट उन्होंने पावर प्ले में लिए. नेक्स्ट गेम में उन्होंने फिर 2 विकेट लिए सनराइजर्स के अगेंस्ट शायद, और फिर उसके बाद केकेआर के अगेंस्ट 3 विकेट उन्होंने पिछले गेम में लिए. आज उन्होंने आकर के फिर 2 विकेट ले लिए. So I think Chennai have been very, very clinical in how they have gone about their business, and no doubt they have become the second team to qualify. राइट, इसी के साथ देखते हैं मैच समरी कैसी रही सीएसके और दिल्ली कैपिटल्स के बीच का ये मुकाबला. जिस तरीके से रन्स बने, जिस तरीके से विकेट गए,
एक बार नजर डालते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के एंड से 223 रन्स बोर्ड पर लगाए गए, सिर्फ 3 विकेट गंवाए, जिसमें दीवन कॉनवे ने 87 रन्स और ऋतुराज गायकवाड़ ने 79 रन्स ऐड किए, और चेतन सकारिया ने 1 और अनिल नौकिया ने 1 विकेट लिया। वहीं दिल्ली कैपिटल्स के एंड से जब बल्लेबाजी करने उतरे तो डेविड वार्नर 86 रन्स उन्होंने स्कोर किए, और अक्षर पटेल ने 15, द मोस्ट, सेकंड मोस्ट फॉर दिल्ली कैपिटल्स, उन्होंने स्कोर किए। वहीं बॉलिंग एंड से दीपक चहर ने 3 विकेट और मतीशा पतिराना ने 2 विकेट लिए, और चेन्नई सुपर किंग्स 77 रन से हार गई। कौस्तव, यहाँ पर डिफरेंस बैटिंग बाय बैटिंग, बॉलर बाय बॉलर दिखाई पड़ रहा है, बिकॉज बैटिंग में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से सिर्फ एक अच्छी पारी अगर किसी की कहेंगे तो वो डेविड वार्नर की थी। इसके अलावा कोई भी प्लेयर 20 रन भी क्रॉस नहीं कर पाया, स्पेशली तब जब आप लोग इतना बड़ा टारगेट चेस कर रहे थे, वो भी सीएसके की बॉलिंग के अगेंस्ट। और वहीं अगर हम बॉलिंग के एंड से बात करें तो फिर इनिशियली विकेट लिए नहीं आप लोगों ने, जिसके चक्कर में इतना बड़ा स्कोर बन गया। और अगर हम सीएसके के बॉलर्स को देखें तो उन्होंने 3 विकेट, 2 विकेट, कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस उनकी रही है। सो इट फेल्ट लाइक कि दोनों बहुत ही डिफरेंट पिचेस पर खेल रहे थे, या दोनों बहुत ही डिफरेंट माइंडसेट पर खेल रहे थे। आई थिंक माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट मैच में दिल्ली जीता था, अगेन वन मैन शो था, रायली रूसो का बहुत अच्छा खेला, पृथ्वी शॉ ने भी इनिशियली बहुत अच्छा खेला था, बट अगेन 38 balls 50 runs 50 odd runs, it's okay, it's not great in my opinion. The Prithvi Shaw can do better than that, but then again coming back to the team, I think it takes a mental toll as well, because he was out for so many days, was not performing well, so he did well. But in today's match, I think when you concede 222 runs probably in the first innings, I think that is where Delhi lost the match. I think just David Warner is a class player, and that's why we got to see his innings today. And he was brilliant again. Like most of the times, he has remained consistent, but others couldn't really help Delhi to find momentum in the season. You can talk about Riley Russo again. One game, then again he couldn't fire today. He was probably out on a duck. Aman Hakim Khan, I think again you can't expect a lot from these players. Lalit Yadav, you can't expect a lot from these players. That is one problem. Delhi has quality. These are quality players, no doubt, but you can't expect them to deliver match by match. So I think in the next season, like I was talking to someone today as well. In the next season, I think Delhi will once again go for shopping. They need stars. They need if by chance Rishabh Pant once again misses out, then they need someone who can stabilize the middle order batting. Like this year, I can't even name someone who can deliver time and again in the middle batting at number 4, 5. Again, they have quality. Definitely, they have quality, but they need someone, a leader there who can build the innings. That I think Delhi failed this time. They depended a lot on Manish Pandey, but then again, Manish Pandey, you won't get consistency. Again, in young players, you can't put the entire pressure on youngsters to like either se match jita do. They are not as good as Yashasvi Jaiswal, if I may say. Yeah. So I think Delhi has the quality, but it's just that it's the small difference between players who can chip in well and players who can win you games. राइट, वो कहते हैं ना कि एक बड़ी टीम को चलाने के लिए सिर्फ एक कैप्टन नहीं लगते, छोटे छोटे बहुत सारे लीडर्स लगते हैं, और दिल्ली की टीम में वही कुछ मिस आउट किया है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि सब में वो क्वालिटी होनी चाहिए, जब आप उनको बनाओ तो उनको सिर्फ एक खिलाड़ी मत बनाओ बल्कि एक लीडर भी बनाओ, ताकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सके। और कुछ ऐसा ही हमें दिल्ली की टीम में कुछ उसी का वॉइड दिखा है, और अगर उन्होंने नेक्स्ट ईयर उसको कन्फ्रंट कर लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया और उसके ऊपर काम कर लिया, तो दिल्ली अगेन लीथल हो सकती है। बिकॉज ऑन पेपर, जैसे हम शुरू से बात करते आ रहे हैं मैं और प्रत्यय, दे वर द टीम जो शायद प्लेऑफ में एंड अप करती। दे हैड दैट कैलिबर, बट देन दे वर द फर्स्ट वन टू गॉट एलिमिनेटेड। दिस इज समथिंग डेफिनेटली द माइंडसेट, नथिंग एल्स। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्लेइंग 11 की। कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच के मुकाबले को लेकर के प्लेइंग 11 अनाउंस हो चुकी है, और किस तरीके से दिखाई पड़ रहे हैं इनका कॉम्बिनेशन आपको हम दिखाते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के एंड से क्विंटन डिकॉक, कर्ण शर्मा, प्रेरक मनकर, मार्कस टोनिस, निकोलस पूरन, कृणाल पांड्या, आयुष पदोनी, कृष्णप्पा गौतम, रवि बिश्नोई, नवीन उल्हक और मोहसिन खान है। वहीं इफ यू गो टू कोलकाता नाइट राइडर्स तो उनकी 11 कुछ ऐसी दिखाई पड़ रही है, विच इज रेमनुल्ला गुरबाज, जेसन रॉय, वेंकटेश अय्यर, नितिश राणा, आंद्रे रसल, रिंकू सिंह, शार्दुल ठाकुर, सुनील नारायण, वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती। चलिए अब देख लेते हैं सोशल ट्रैकर पर क्या चल रहा है इस वक्त, बिकॉज लोग ट्वीट्स कर रहे हैं, बातचीत जारी है मैच को लेकर के, और उनके ओपिनियंस क्या हैं एक बार वो ले लेते हैं। सो ये है पहला ट्वीट लखनऊ सुपर जायंट्स के एंड से, कोलकाता ग्रीन एंड मरून लेट्स प्ले। और आज लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम आपको मरून में दिखाई
देगी, which is the color of मोहन बागान। और उन अपनी तरफ से जो अपना जेस्चर शो अप किया है लखनऊ सुपर जायंट्स ने, वो कुछ ऐसा रहेगा। वही एक और ट्वीट, क्रिकेट फैंस डिस्कसिंग पॉसिबल वेज फॉर द टीम्स टू क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स, मीनवाइल केकेआर फैन, छोड़ दो ना यार, कुछ और बात करते हैं। I told you Kaustav, it is near impossible, but ठीक है, चलो यार यही बात करते हैं। डाला है यार वो ट्वीट भी मैंने ही डाला है। नाइस नाइस, मैं भी रिट्वीट करती हूँ। लेट्स टेक अ लुक एट अनदर ट्वीट। Quentin de Kock has struggled against the spin wizard Sunil Narayan. Can the Caribbean star played maintain his dominance? और यहाँ हम देख सकते हैं क्विंटन डी कॉक वर्सेस सुनील नारायण प्लेयर बैटल, 47 बॉल्स 47 रन्स, 2 बार आउट किया है, व्हिच मींस क्विंटन डी कॉक ने अभी तक प्रिसाइसली सुनील नारायण को डिकोड नहीं किया है, जो व्हिच इज नॉट अ बिग थिंग बिकॉज बहुत लोगों ने डिकोड नहीं किया है और कभी-कभी सुनील नारायण खुद को भी डिकोड नहीं कर पाते हैं। सो बट इट्स ओके, इट हैपेंस, लाइक दैट्स हाउ क्रिकेट प्लेज इट्स गेम। लेट्स टेक अ लुक एट अनदर ट्वीट। KKR will be eliminated if they win by less than 103 runs versus LSG. Well, that's quite a thing. Like, cost of 103 runs versus Lucknow Super Giants. That too, in your home ground, which has not been that great for you this season. That's quite difficult. That's quite difficult. Another tweet, Kolkata Knight Riders, एकदम मिडिल ऑर्डर बैटल, और हम ये देख सकते हैं दोनों के बीच की बैटल, 1171 रन्स, नंबर 1007 रन्स। मैं समझी मिडिल ऑर्डर बैटर्स में से केकेआर का मिडिल कैन ऑर्डर एनीवन एक्सप्लेन कौस्तव? हाँ भाई, केकेआर का Okay, मिडिल ऑर्डर but बैटर्स ने 1171 रन्स बनाए, और जो कि आईपीएल में नंबर 1 पे है, और नंबर 2 पे ही लखनऊ का है 1007। मोस्टली बाकी टीम का टॉप ऑर्डर फंक्शन करते हैं, हम दोनों का मिडिल ऑर्डर। okay, but क्वालिफाई नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। Let's take a look at another tweet. Okay, expecting a big one from Quinny tonight, 140 of 70 versus KKR। उन्होंने May 18, 2022, which is previous year, उन्होंने कोलकाता के अगेंस्ट क्विंटन डी कॉक ने अपना इतना बड़ा स्कोर खड़ा किया अगेंस्ट कोलकाता, और आज रिकॉल कर रही है लखनऊ की टीम कि अगर ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए। वाकई ईडन गार्डन्स ओन कर लेंगे आज अगर क्विंटन डी कॉक 140 रन बनाते हैं, बिकॉज 103 रन तो खुद कोलकाता को चाहिए जीतने के लिए। देन यू नीड टू बीट क्विंटन डी कॉक ओनली, नॉट द होल टीम। ये देखिए, गुड। केकेआर का मजाक बनाते बनाते कल एमआई ना आउट हो जाए। कोई बात नहीं, देखेंगे, ये हम लोग कल देखेंगे, ठीक है? ये कल की बात है, अभी हम आज की बात करेंगे। बिल्कुल, करिए करिए, आज आपका दिन है, कल मेरा दिन होगा। देखते कल हम तुम्हें रखेंगे ही नहीं, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच कौस्तव एंड प्रत्यय फॉर टॉकिंग टू मी राइट हियर। हम लोग मैच के बाद वापस जुड़ेंगे और देखते हैं कौन सी टीम क्वालिफाई करी और कौन सी नहीं, और इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। We definitely gonna come back. Do come back with us on CricTrackers in the Air Show.